ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे सप्तम्यां वायव्य सहितां उत्तर भागे अथ तृतीयोऽध्याय। उपमन्युरुवाच। श्रीकृष्ण महेशस्य शिवस्य परमात्मनः मूर्त्यात्मभिस्ततं कृत्सनं जगतेत् चराचरम् स शिव सर्वमेवेदं स्वकीया भिक्षमूर्तिभिः अधितिष्ठत्य मेयात्मा हो तत्सर्वमनुस्मृतं ब्रह्मविष्णुस्तथा रुद्रो महेशान सदाशिवा मूर्तयस्तस्य विज्ञेया याभिर्विक्ष्यमिदं ततम् अथान्यक्षापि तन्वा पञ्चब्रह्मा समावया तनूभिस्ताभिरव्याप्तमिह किञ्चिन् विद्यते ईर्ष्यान् पुरुषो घोरो वां सद्यस्थैव च ब्राह्मणे तानि देवस्य मूर्तयः पञ्चविक्षुता ईर्ष्यानाख्या तु या तस्य मूर्तिराध्या गरीयसी भोक्तारं प्रकृते साक्षात् क्षेत्रयज्ञमधिष्ठति स्थानोस्तत्पुरुष शाख्या या मूर्तिमत्प्रभो गुणाक्षात्मकं भोग्यं व्यक्तं दितिष्ठति धर्मधष्टागसंयुक्तं बुद्धितत्त्वं पिनाकिना अधितिष्ठत्य घोराख्यमूर्तिरत्यन्तपूजिता वामदेवायं मूर्तिं महादेवस्य वेधस अहङ्कृतेरधिष्ठात्री महारोगा माहुरागं वेदिना सद्यो जाता वयं मूर्तिं शम्भोर्मितवर्चसा मनसा समधिष्ठात्रीं मतिमन्तः प्रचक्षते श्रोतस्य वाच शब्दस्य विभोर्यवयोर्मनस्तथैव च ईश्वरीमीश्वरस्ये मामि शाख्यां हि विदुर्बुधा त्वक्पाणिस्पर्शवायु नामीश्वरीं मूर्तिमैश्वरीं पुरुषाख्यं विदुः सर्वे पुराणार्थविशारदा चक्षुषरन्स्यापि रूपस्या गणेस्तथैव च अघोराख्यमधिष्ठात्रीं मूर्तिमाहुर्निशना रसनायाक्षपायोक्षरसस्पायापां तथैव च ईश्वरीं वामदेवाख्यां मूर्तितन्निरतां विदुः घ्राणस्य चैवोपस्थस्य गन्धस्य च भुवस्तथा सद्यो जाता वयं मूर्तिमीश्वरी सम्प्रचक्षते मूर्तये पञ्चदेवस्य वन्दनीया प्रयत्नता श्रियोऽर्थिभिर्नित्यं श्रेयसा मे कहेतवा तस्य देवादिदेवस्य मूर्तयष्टकमयं जगत् तस्मिन् व्याप्य स्थितं वीक्षं सूत्रे मणिगणा इव शर्वो भवस्तथा रुद्र उग्रो भीमा पशुपति ईर्षणाक्ष महादेवो मूर्तयाश्च शिविषुक्षता भूम्यम्भोग्रीं रुद्र व्योमक्षेत्र ज्ञार्क निशाकरा अधिष्ठिता महेशस्य शर्वाधैरष्टमूर्तिभिः चराचरात्मकं वीक्षं धते विश्वं भरात्मिका शार्वया मूर्तिर्रीतिशास्त्रस्य निक्षय सजीवनं समस्तस्य जगता सलीलात्मिका भावद्विति गीयते मूर्तिभवस्परमात्मना बहिरन्तर्गतादिश्वं व्याप्य तेजोमयी शुभा रौद्रीरुद्रस्य या मूर्तिरास्थिता गोरूपिणी सपन्दर्यत्यनिलात्मेधं बिभर्ति सपन्दे स्वयं औघृति कथ्यते सतीर्मूर्तिरुग्रस्य वेधसा सर्वाकाशदा सर्वव्यापिका गगनात्मिका मूर्तिभीर्मस्य भीमाख्या भूतवृन्दस्य भेदिका सर्वात्मनाधिष्ठात्री सर्वक्षेत्रनिवासिनी मूर्तिपशुपतेर्गेया पशुपाशनिकृन्तनी दीपयन्ती जगत्सर्वं दिवाकर समावया ईर्षणाख्या महेशस्य मूर्तिदैर्वी विसर्पति आपयाय यतीयो भिक्षम् अमृताशुन्निशाकर
महादेवस्य सा मूर्तिर्महादेव समावया आत्मा तस्याष्टमी मूर्ति शिवस्य परमात्मना व्यापिकेतरमूर्तिना विश्वं तस्माच्छिवात्मकं वृक्षस्य मूलसेकेन शाखा पुष्यन्ति वै यथा शिवस्य पूज्या तदत्पुष्य यस्य वपुर्जगत् सर्वभयप्रदानं च सर्वानुग्रहं तथा सर्वोपकारकरणं शिवस्याराधनं विदु यथे पुत्रपौत्रादे प्रीत्या प्रीतो भवेत् पिता तथा सर्वस्य सम्प्रीत्या प्रीत्यो भवति शङ्करा ते हि नो यस्य कस्यापि क्रियते यदि निग्रह अनिष्टं षट्मूर्तेस्तत्कृतमेव न संशया अष्टमूर्तयात्मना विश्वधिष्ठाय स्थितं शिवं भजस्व सर्वभावेन रुद्रं परं कारणम् इति श्री शिव महापुराणे सप्तम्यां वायव्य सहितायाम् उत्तरभागे कृष्ण योपमन्युरूपदेशवर्णन नाम तृतीयोऽध्याय। अथ चतुर्थोऽध्याय। कृष्णुवाच भगवन् परमेशस्य सर्वस्यामित्तेजसा मूर्तिभिर्वक्ष्यमेवेदं यथा व्याप्तं तथा श्रुतम् अथैतज्ज्ञातुमिच्छामि यथात्मयं परमेशयो स्त्रीपुंभावात्मकं चेदं ताभ्यां कथमधिष्ठितम्। उपमन्युर्वाच श्रीमदीभूतिं शिव्यो यार्थात्मयं च समासता वक्षे तदिस्तरादुक्तुं भवेनापि न शक्यते शक्ति साक्षान् महादेवी महादेवक्ष शक्तिमान् तयोर्विभूतिलेशो वै सर्वमेतच्चराचरं वस्तु किञ्चिद्रूपं किञ्चिदस्तु चिदात्मकं द्वयं शुद्धं शुद्धं च परं चापरमेव च यत् सरति चिचक्रं चिचक्रस्मन्वितं तदेवाशुद्धं परमित्रं तु परं शुभम् अपरं च परं चैव द्वयं चिदात्मकं शिवस्य च शिवायाक्ष स्वामयं चैतत् स्वभावतः शिव्योर्वशे वीक्षं स वीक्षस्य वशे शिवो ईर्षितव्यमिदं यस्मात् तस्मादीश्वेश्वरो शिवो यथा शिवस्तथा देवी यथा देवी तथा शिवा नानयोरन्तरं विच्छान् चन्द्रचन्द्रयोरिव चन्द्रो न खलु भाति यथा चन्द्रिकया विना न भाति विद्यमानोऽपि तथा शक्त्या विना शिवा रव्या हि विना यद्दानुरेश न विद्यते प्रभा च भानुना तेन सुतरां तदुपाक्षया एवं परस्परापेक्षा शक्तिमतो स्थिता न शिवेन विना शक्तया च विना शिवा शक्तया शिवो नित्यं भुक्तमुक्तो च देहिनाम् आद्यासैका पराशक्ते चिन्मयी शिवसंशया या माहुर्खिलेशस्य तैस्तैर्नुगुणैर्गुणे समान धर्मिणीमेव शिवस्य परमात्मना सैका परा च चिद्रूपा शक्तिप्रस्वधर्मिणी विभज्य बहुधा वीक्षं विद्धाति शिवेच्छया सा मूल प्रकृति माया त्रिगुणा च त्रिधा स्मृता शिव्या च विपर्यस्तं यया तद्मिदं जगत् एकदा च द्विधा चैव तथा शतसहस्रदा शक्तया खलु भिद्यन्ते बहुधा व्यवहारत शिवेच्छया पराशक्ति शिवतत् वैकतां गता तपा परिस्फुरत्यादो सर्गे तैलं तिलादिव तथा क्रिया खयया शक्त्या शक्तो शक्तिं दुत्थया तस्यां विक्षोभयामान्या मादो नादसमुद्धभो नादानि दिनो स्फीतो बिन्दुर्बिन्दोदैर्व
सदाशिवा तस्मान्महेश्वरो जाता शुद्धविद्या महेश्वरात् सा वाचामीश्वरी शक्तिर्वागीशाख्या हि शूलिना या सा वर्णस्वरूपेण मातृकेति विजृम्भते अथानन्तसमावेशान् मायाकालं वा सृजत् नियत्तिञ्च कलां विद्यां कलातो रागपूरुषो मायात पुनरेवाभूदव्यक्तं त्रिगुणात्मकं त्रिगुणा च ततो व्यक्तादिभक्ता सयुस्त्रयो गुणा सत्त्वं रजस्तं क्षेति ये व्यर्थमखिलं जगत् गुणेभ्यः क्षोभय मानेभ्यो गुणेशाख्यस्त्रिमूर्तया अभवन्महदादीनि तत्त्वानि च यथाक्रमं तेभ्यस्युरण्पिण्डानि त्वशङ्खानि शिवाख्यया अधिष्ठितान्यनन्ताद्यैर्विद्धैश्च करवर्तिभिः शरीरान्तर्भेदेन शक्तिर्भेदा प्रकीर्तिता नानारूपास्तु विज्ञेया स्थूलसूक्ष्म विभेदता रुद्रस्य रौद्री सा शक्तिर्विष्णुर्वैष्णवी मता ब्राह्मणी ब्राह्मणं प्रोक्ता चैन्द्रस्येन्द्रिति कथ्यते किमत्र बहुनोक्तेन यद् यदीक्षमिति कीर्तितं शक्त्यात्मनैव तद्व्याप्तं यथा देहो अंतरात्मना तस्मात् शक्तिमयं सर्वं जगत्स्थावरजङ्गमं कलाया परमा शक्ति कथिता परमात्मना एवमेषा पराशक्तिरीश्वरे चानुयानिनी स्थिरं चरं च यद्वीक्षं सृजतीति विनिक्षया ज्ञानक्रिया चिकीर्षा स्थितृष्टभिः स्वात्तं शक्तिभिः शक्तिमानीश्वर शक्तिक्षं व्याप्यादितिष्ठति इदमिदं नेथं भवेदित्यमात्मिका इच्छाशक्तिर्महेशस्य नित्यकार्यनियामिका ज्ञानशक्तिस्तत्तु तत्कार्यकरणं कारणं तथा प्रयोजनं च तत्त्वेन बुद्धिरूपाद्वयस्वती तथेपस्थितं क्रियाशक्तिर्यथाध्यवस्थितं जगत् कल्पयत्खिलं कार्यं क्षणात् संकल्परूपिणी यथा शक्तित्रयोत्थानं शक्तिप्रसवधर्मिणी शक्तया परमयानुना प्रसूते संकलं जगत् एवं शक्ति समायोगा शक्तिमानुच्यते शिवा शक्तिमदुत्थं तु शाक्तं शैवमिदं जगत् यथा न जायते पुत्रं पित्रं मातरं विना तथा भवं भवानी च विना नैत चराचरं स्त्रीपुंस प्रभवं वीक्षं स्त्रीपुंसातं कमेव च स्त्रीपुंसूर्ययोर्विभूतिक्ष स्त्रीपुंसाभ्यां धिष्ठितं परमात्मा शिवा प्रोक्ता शिवा सा च प्रकीर्तिता शिवा सदा शिवा प्रोक्ता शिवा च स मनोन्मनी शिवो महेश्वरो गेय शिवा मायेति कथ्यते पुरुषा परमेशान प्रकृति परमेश्वरी रुद्रो महेश्वर साक्षात् रुद्राणि रुद्रवल्लभा विष्णुविक्षेशरो देवो लक्ष्मीविक्षेशर प्रिया ब्रह्मा शिवो यदा सृष्टा ब्राह्मणी ब्राह्मण प्रिया भास्करो भगवान् शंभु प्रभा भगवती शिवा महेन्द्रो मथाराती शची शैलेन्द्र कन्यका जातवेदा महादेवा स्वाहा शर्वार्धदेहिनी यम स्त्रियंबको देवस्तत्प्रिया गिरिकन्यका निक्षृति भर्गवानीशो नेत्रधृति नंदिनी वरुणो भगवान् रुद्रो वारुणी भूतरात्मजा बालेन्दु शेखरो वायु शिवा शिव मनोहरा यक्षो यज्ञ शिरोहर्ता ऋतिहिर्म गिरीन्द्रजा चंद्राधर शेखर क्षन्द्रो रोहिणी रुद्रवल्लभा ईर्षान् परमेशान्नस्त दार्या परमेश्वरी अनन्तवल्यो अनन्तो अनन्तान् दन्तवल्लभा कालागिरुन्द्र कालारी कालिकालन्तप्रिया
पुरुषाख्यो मनुशंभु शत्रुपा शिवप्रिया दक्ष साक्षान् महादेव प्रसूति परमेश्वरी रुचिर्भवो भवानी च बुधेराकुति रुच्यते भृगुभर्गाक्षिहा देवा ख्याति स्त्रीनयन प्रिया मरीचिर्भगवानुद्र सम्भूति शर्वल्लभा गंगाधरो अंगिराज्ञ समृति साक्षदुमा स्मृता पुलस्तय शशव भृन्मौली प्रीतिकांता पिनाकिना पुल स्त्री पुरधर धन्वंसी तत्प्रिया तु शिवप्रिया क्रन्तु धन्वंसी क्रतु प्रोक्त सन्निधिर्दय्यता विभो त्रिनेत्रो त्रिरुमा साक्षाद न सूया स्मृता बुधे कह्यशप कालहा देवो देवमाता महेश्वरी वसिष्ठो मन्मथारातिर्देवी साक्षादरुन्नधत्ति शंकरा पुरुषा सर्वे स्त्रिय सर्वा महेश्वरी सर्वे स्त्री पुरुषास्तस्मात्यारेव भूतय विश्वे भगवानीशो विश्व परमेश्वरी श्रावयं सर्वं मारूपं श्रोतशूलवरायुधा पृष्ठवयं वस्तु जातं तु धते शंकर वल्लभा पृष्ठस एव विश्वात्मा बालचन्द्रावस्तंसक द्रष्ट्वयं वस्तु रूपं तु बिर्भाति भवल्लभा विश्वेश्वरो देवा शशिखण्ड शिखामणि रसजातं महादेवी देवरस्यता शिवा प्रेजातं च गिरिजा प्रेयांश चैव गराशना मन्तव्यवस्तुतां धत्ते सदा देवी महेश्वरी मन्तसैव विश्वात्मा महादेवो महेश्वर बोधव्यवस्तुरूपं तु बिभ्रात भवल्लभा देवास एव भगवान् बोधामुग्धेन्दुशेखरा प्राणपिनाकी सर्वेषां प्राणिना भगवान् प्रभु प्राणस्थितितस्तु सर्वेषाम् अम्बिका चाम्बुरूपिणी विभर्ति क्षेत्रतां देवी त्रिपुरान्तक वल्लभा क्षेत्रगत्यत्वं तदा धत्ते भगवानन्द कान्तका शूलायुधो दे देवा शूलपाणी प्रिया निशा आकाश शंकरो देवा पृथ्वी शंकर प्रिया समुद्रो भगवानीशो वेला शैलेन्द्र कन्यका विशो वृष धब्जो देवो लता विश्वेश्वर प्रिया पुलंगमखिलं धते भगवान् पुरुषासना स्त्रीलिंगं चाखिलं धते देवी देवमनोरमा शब्दजालं शेषं तु धते शर्वस्य वल्लभा अर्थस्वरूपम् अखिलं धते मुख धेन्दुशेखरा यस्य यस्य पदार्थ्यस्य या शक्तिरुदार्यता सा सा विश्वेश्वरी देवी स सर्वो महेश्वरः यत्परं यत्पवित्रं च यत्पुण्यं यच्मङ्गलं तत्तदाह महाभागा अस्तयोस्तेजो विजृम्भितं यथा दीपस्य शिखा दीप्यते गृहं तथा तेजस्तयोरेत चापये दीपयते जगत् त्रिनादि शिव मूर्त्यन्त विश्वस्यातिशयकरं सनिकर्ष क्रमशतयोरिति पराश्रुति सर्वकारात्मका वेतो सर्वश्रेयो विधाय पूजनीयो नमस्कार्यो चिन्तनीयो च सर्वदा तथा प्रज्ञमिदं कृष्णं यथा मह्यं परमेशयो कथितं हि मया तेद्य न तु तावति यत्या तत्कथं शक्यते वक्तुं यथार्थं परमेशयो
महत्मामपि सर्वेषां मनसोऽपि बहिर्गतम् अन्तर्गत अनन्यानामीक्षरापिर्तचेतसाम् अन्येषां बुद्धनारूढमारूढं च यथैव तत् येयमुक्ता विभूतिर्वर स परामता अप्रक्राप्राकृतं परामन्यां गुहां गुह विदो विदु यतो वाचो निवर्तन्ते मनसा चेन्द्रियसः अप्रक्राकृति परा चेषा विभूति पारमेश्वरी सैवेह परं धाम सैवेह परमा गति सैवेह परमाकाष्ठा विभूति परमेष्ठिना तथा प्राप्तुं प्रयतन्त्रेऽत्र जित्य श्रासा जितेन्द्रिया गर्भकारागृहद्वारं निश्चिद्रं स्फटितुं यथा संसाराशीर्विषालीडामृतसञ्जीवनौषधं विभूतिं शिव्योर्विद्वान् बिभेति कुतक्षण य परां परा चैव विभूतिं वेति तत्त्वता सा परं भूतिमुल्लङ्घ परां भूति समश्नुते एतते कथितं कृष्णं यथामयं परमात्मनो रहस्यमपि योगस्य भर्गभक्तो भवानिति नाशिष्यो भयोऽप्यशेव्यभ्यो न भक्तेभ्यो कदाचन व्याहरेदिशयोर्भूतिमिति वेदानुशासनं तस्मात्तं मतिकल्याण परेभ्यः कथयेन हि द्वादृशेभ्यो नुरूपेभ्यो कथयेतं चान्यथा विभूतिमेतां शिव्यो याज्ञेभ्यो प्रदापयेत् संसारसागरन्मुक्तः शिवसायुज्यमाप्नुयात् कीर्तनादस्य नश्यन्ति महान्तये पापकोटया त्रिशुद्रुधा सम्भस्यस्तेर्विष्यन्ति ततोऽधिका नश्यन्त्यनिष्टरीपवो वर्धन्ते सुहृदस्तथा विद्या च वर्धते शैवी मति सत्ये परिवर्तते भक्तिपरा शिवे साम्बे सानुगे सपरिच्छदे यदृष्टतं चान्यः तत् दाप्नोत्य संशयम् अन्तशुचि शिवे भक्तो द्विक्षभ्य कीर्तयेद्यदि प्रबले कर्मभिः पूर्वं फलं चेत् प्रतिपद्यते पुनः पुनः संभयस्ते तस्य नास्ति दुर्लभम् इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायव्यसंहितायाम् उत्तरभागे गौरीशङ्कर विभूतियोगे नाम चतुर्थोऽध्यायः।